So beta, this is chapter number 13, chemical effects of electric current. Okay. So in some classes we have started this chapter, and still there were some groups in which this chapter was not able to start. So we will start this chapter from the beginning. Okay. So Farman, yes. Farman, what do you want to say? जी बेटा फरमान. Okay. अच्छा बेटा, in the start of this chapter there are some uses of the electricity in our daily life. So electricity is one of important uh, source of energy, and we use in our daily life. Before starting the class, I would like to share a video in which we will see how electricity is used in our daily life. Visualize a different world where you couldn't turn on a light, a computer, or even use the electric kettle to make your favorite hot chocolate drink. We use electricity constantly in our daily lives. It is one of our most important types of energy and power that we use. Its uses range from small batteries that operate your remote control car to huge motors that power ships and trains. Electricity operates our lights, runs our refrigerators, kitchen appliances, and powers motors. So electricity is very much important to all of us. It takes a lot of work to generate this magical thing called electricity. Let's first learn the most popular way to generate electricity. How to make electricity. We get the electricity by simply changing other forms of energy. For example, we can burn coal or many other fuels which diverts chemical energy into thermal energy or heat energy. Heat energy will cause water to heat sufficiently and move in a tank. Energy of motion is kinetic energy. The kinetic energy in moving water causes a turbine to turn a generator. A generator changes kinetic energy of a spinning wire or coiled wire to electrical energy. The wire is surrounded on both sides by a very strong magnet. On one side, the negative side of the magnet is facing the wire. On the other side, the positive side of the magnet is facing the wire. Electrons within the wire are attracted to the north part of the magnet and will push away from the south part of the magnet. By spinning the wire, it continuously passes by the two opposite charges of magnetism. The electrons within the wire move towards the positive magnet end and away from the negative magnet end. We see uses of this electricity in our homes and schools. Now let's remember the definition of electricity. Electricity is a type of energy that can build up in one place or flow from one place to another place. There are two types of electricity, static and current. Let's study about these one by one. Static electricity. When electricity gathers in one place, it is called static electricity. For example, when you rub your feet on a carpet and then zap something when you touch it, it is static electricity that you have built up on the surface of your skin, discharging onto another object. Lightning is also a powerful example of static electricity. Current electricity. Electricity that moves from one place to another place is known as current electricity. Examples of current electricity are starting a motorbike, turning on a light, watching TV, playing video games, charging a cell phone, and many more. Do you remember whenever you visit the local grocery shop, they use weighing machines to measure the weight? Do you have any idea how electricity is measured?
No, it cannot be measured like that. We can measure electricity in a number of ways, but few of them are particularly important. Voltage. The voltage is a type of electrical force that makes electricity run through a wire, and we measure this in volts. The greater the voltage, the more current will tend to flow. Volt is an electrical unit of voltage that is represented by the symbol V. Current. Voltage itself does not go anywhere. What moves through the electrical wire in a circuit is an electrical current. It is a steady flow of electrons that is measured in amperes or amps. Power. Together, voltage and current provides us electrical power. The bigger the voltage and the bigger the current, the more electrical power we have. We measure electrical power in units called watts. Now, we are all impressed with various uses of electricity, but it is dangerous as well. It sounds so scary, and it is. If you remember the safety rules, you can use electricity without getting hurt. Below is some safety rules before using anything related to electricity. Don't plug a lot of stuff into a single extension cord. Always fly your kite away from power lines. Keeping electrical things far away from water. Do not climb a tree near power lines. Always wear unwet slippers before touching any electrical equipment. Stay away from broken or fallen power lines. Always ask your parents' help before touching electrical equipment. I hope now you know much about electricity. Be careful while using electricity and be kind to one another. Thanks for watching. Bye-bye. Okay. Biha, unmute yourself. सर जी सर कल स्कूल आना है फ्राइडे या फिर नेक्स्ट वीक से आना है? नहीं बेटा, अभी आप नहीं आए। सही है सर। क्या? ओके सर। ओके, बख्तावर। यस। सर सर ये जेकी वीडियो ता ॾेखारी न हुन में कुछ समझ में कान आयो त तव्हां ये वीडियो जी लिंक मोकिले सघंदो? जी बिल्कुल, वाह मोकिलंदा। ओके सर। करने सर हिन में जेकी वीडियो में जेको चयो पतंग पतंग पाणी जेकी तव्हां पतंग उड़ायो त उहो तार खां परे उड़ायो, छो सर? करंट त हुन में न लगी सघंदो न। एक्चुअली वहाँ पे बेटा एक ये चांस हो सकता है कि वो जो पतंग आप उड़ा रहे हैं और उसमें फंस गई और फिर आप उसको खींच रहे हैं तो वो जो तार है वो डैमेज। ओके सर। और इसी तरह कई ऐसे लड़के ये भी करते हैं यूज के मेटेलिक वायर्स भी यूज करते हैं। अगर मेटेलिक वायर होगी तो दैट विल प्रोवाइड हम डायरेक्टली वहाँ से करंट। हाँ सर जी सर हिन वीडियो जी लिंक व्हाट्सएप ते मोकिलंदो ऐं सर अगर होमवर्क जी जी सर वो अगर होमवर्क असांखे मोकिलिणो आहे तव्हां ॾे त पोइ गूगल क्लासरूम जो कोड तव्हां जी जी उहो बि बिल्कुल मोकिलिजो। बिल्कुल थैंक यू सर। in Naveen. Yes. Naveen. जी सर असांजूं क्लासूं कॾहिं ताईं असांजी ऑनलाइन रहंदियूं? बेटा अभी ऑनलाइन ही चलेंगी, ठीक है, जब तक फर्दर डिसीजन आए, ठीक है। यस सर। ये जवेरिया।
सर मां पुछण चाहियां थी सर जेका वीडियो मोकिली असांजे मतलब असां जेकी ॾिठी उन में जेकी सर करंट इलेक्ट्रिक हुयो जेको वो बि हुयो हाणे उन जो मतलब त सर इहो ई आहे न त मतलब जेकी शयूं असां इन पंहिंजे घर में माने यूज़ कंदा आहियूं आम ॾींहं तौर ते उन्हनि खे चइबो आहे जेके इलेक्ट्रिक हुते हुजनि। हाँ। तो सालार ऐं सर बेटा ये इहो एक मिनट सालार, क्या आप बैकग्राउंड में चला रहे हैं? टर्न ऑन योर कैमरा। सालार, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योरसेल्फ। जी, आप अपनी कैमरा क्यों नहीं हाँ ऑन कर रहे? सालार, कैमरा ऑन करें बेटा। सालार, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आई विल रिमूव यू। ओके फाइन। जी जवेरिया जी, आप क्या कह रहे हैं? यस। हाँ त सर मां चवां पई त पोइ उन करंट खे त असां जेके आम तौर ते यूज़ कंदा आहियूं न उन्हनि खे इलेक्ट्रिकल चइबो आहे नी ऐं जेको सर स्टैटिक मतलब इन वीडियो में हुयो वो न समझ में आयो आहे थोरो। स्टैटिक बेटा वो एक ही जगह पे खड़ा होगा, इट विल नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे नॉर्मली जी हम सर जेके असां जी जी, जिस तरह आप लोगों ने देखा जी होगा कि आई थिंक 3 या 4 क्लास में ये सिखाते हैं कि व्हेन यू विल कॉम्ब योर हेयर्स, ठीक है, बालों में अगर आप कंघी करेंगे व्हाट विल हैपन, इट कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर, ठीक है, हाँ हाँ सर। दैट इज एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इट विल नॉट और सर मूव। एक ही जगह पे जो इलेक्ट्रिसिटी बार बार वहीं पर ही है तो उसको हम वो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो एक ही जगह हाँ पे ठहरी रहेगी लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जरूर होगा, इट विल नॉट, तो इस वजह से। बस थैंक यू सर समझ में आ गया। ओके, तो जुल्कर ने सके जी बेटा, जुल्कर ने अनम्यूट सर। सर यस सर मिल्क जेको आहे सर उहो गुड कंडक्टर छो आहे हुन इलेक्ट्रिसिटी जो, हुन में वाटर त न हूंदो आहे? बेटा, मिल्क में वाटर होता है और पहली बात यह है कि वाटर की वजह से कंडक्शन नहीं हो रही। मिल्क also contain minerals, ठीक है, मिनरल। कैल्शियम और इस तरह दूसरे मिनरल्स मौजूद हैं, तो दैट्स व्हाई मिल्क इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। ओके सर। मोहम्मद हुज़ैफा, यस हुज़ैफा सर जी, सर उर्दू में पढ़ाएं सर, सिंधी समझ नहीं आ रही। ठीक है बेटा, एक्चुअली वो एक दो सवाल इस तरह आ गए ना, तो फाइन, नाउ आई विल focus regarding the language. Daniel, 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 unmute yourself. सॉरी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, हेलो क्या कहते आवाज आ रही है? हैं? जी जी, आ रही है आवाज, कहें आप। क्या हाल है सर? सब्जेक्ट कौन सा सर? आपको पता नहीं है? हेलो, सर आप कौन से कॉल आ क्लास? रही है मुझे। मैं अभी तो सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो ना, तो फिर आप यहाँ पे जी क्या कर रहे हो? ओके बेटा, अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो in our daily life we use electricity in different appliances, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों यूज कर पाते हैं?
because of the conductors. So in our daily life, there are many things which are the good conductors of the current, and there are various things which are bad conductors or non-conductor of the current. Okay. So can somebody tell me what are the good conductors? कोई बता सकता है what are the good conductors? जी फरहान. Sir, good conductors are those which conduct electricity like all the metals. Okay. Example. और सर जिसमें सर मेटल में जैसे हम जो कॉपर की वायर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और सर उसमें सर जो वाटर में मतलब साल्ट वगैरह मौजूद होता है, वो साल्टी वाटर भी उसको कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। और सॉइल में जिस वाटर में सॉइल डालेंगे वो भी कंडक्ट कर सकता है। ओके सर। These are the various examples which are good conductors. Conductors are those substances which electricity can pass. ठीक है, ऐसी चीजें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसको कहते हैं कंडक्टर। और इसी तरह नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स आर दोज सबस्टेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। ऐसी चीजें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो। ठीक है, कोई बताएगा एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कंडक्टर्स? will share examples of the non बार-बार वही पूछते आ रहे हैं। असलम सर, नॉन कंडक्टर वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करें, और मेरे ओपिनियन मुताबिक सर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी इसमें वो टेक पार्ट करते हैं नॉन इलेक्ट्रो सॉल्यूशन में, और वो कभी भी इलेक्ट्रो सॉल्यूशन में पार्ट नहीं कर सकते। एक बताएगा सर, बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जो दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। So for example, Teflon, wood, paper, and plastic or rubber, these are examples of bad conductor, and they are also known as insulators. Okay, so they are known as insulators. अच्छा बेटा, एक बात याद रखें मेरी कि we are able to electricity because of these two types of the materials. Both type of materials helps in the usage of the electricity. क्योंकि अगर good conductors नहीं होते then how we would be able to carry the current from one point to another point. ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई मटेरियल नहीं होता जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक करंट को नहीं पहुंचा सकता तो फिर हम उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, एट द सेम टाइम इंसुलेटर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हम उसको सेफली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना चाह रहे हैं तो वी विल रिक्वायर्ड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए होगा क्योंकि उसको हम सेफली यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे वी आर यूजिंग वायर्स इन आवर डेली लाइफ, तो देयर इज अ मेटल इनसाइड ऑफ द वायर that is a good conductor. Due to that, we can use different appliances. At the same time, wires are covered with the plastic, so that is a bad conductor or insulator. So that's why we are able to use it safely. अगर ये wires के ऊपर वाला जो cover है, that would have been also conductor, then we would not able to use it safely. ठीक है, तो इस वायर को हम सेफली यूज नहीं कर पाते। अच्छा बेटा, अब इसी हवाले से एक और वीडियो है मेरे पास, तो वी आर गोइंग टू दैट वीडियो।
Wow! Slides! Hey guys, should I go on this slide? Hmm. Zoom! Ouch, it's very hot! It's burning! I don't know what's wrong with it. Should I go again? Okay. Should I try that one? Hmm. Zoom! Wow, it is cool. Wow, you're having fun. Yes, but something is wrong with this light. This is very hot. Oh, this slide is made of metal. It is a good conductor of heat. It takes heat from the sun and transfers the heat to anyone who touches it. But sun rays are falling on this slide too. But it does not feel hot. Look closely. It is made of different material. It is called plastic. It does not absorb or transfer heat. Oh, so few materials absorb and transfer heat, but others don't? Yes, you're right. Few materials like metal let heat go through. These are called conductors. So this light is made of metal. It lets the heat go through it. So it is a conductor. Yes, metals are good conductors of heat. And this light is made up of plastic. It does not let the heat pass through it. So it is not a conductor. Yeah, some materials do not allow heat to pass through them. These materials are known as insulators. Conductors and insulators. Guys, do you understand it? Can you show me more examples? Let's check those benches. Touch it carefully. Electric insulator also. You got it right. So now you know about insulators and Bulb does not light up. That means a paper circuit? yeah, but it is incomplete. Oh, is that why the bulb is not lighting up? For that, we need to complete the circuit. You said it right. You are a genius boy. Let's try to complete the circuit with things lying here. Here is a paper straw. Let's complete the circuit with the help of it. Okay, let's try. Oh, bulb does not light up. That means a paper straw does not let the electric current pass through it. Yeah, paper does not let current go through it. It is an electrical insulator. Oh, now I get it. The materials that do not allow electricity to pass through them are known as electrical insulators. You're right. Let's try this spoon. Wow, the spoon lets the current pass through it. That makes the bulb light up. Yeah, the spoon is made of metal and metals are good conductors of electricity. Oh, metals are good conductors of heat as well as electricity. Yes, let's try this wooden chopstick. Bulb does not light up. We found in the garden that wood is an insulator of heat, and now we see that it's an electric insulator also. You got it right. So now you know about insulators and conductors. Can you tell me something about this wire? Why is it covered with plastic? Plastic is a good electrical insulator. That is why it is used to cover materials that carry electricity. The plastic covering that surrounds wires is an electrical insulator. It stops you from getting an electrical shock. Okay, I know. All the electricity supply in our home comes through these kind of wires. So now you know the difference between insulators and conductors. Yeah, conductors are those materials that let current or heat pass through them, and insulators are those that don't let current or heat to get through them. Correct. सर असां इहो क्वेश्चन आहे की असां जेको असां छो गुड कंडक्टर ऐं नया इलेक्ट्रिसिटी आहे Actually, humans are not good conductor. Humans are not good conductors of सर electricity. असां ठीक है? और जो सर हमें असां के करंट लग जाए बात तो तो कोई सुने हथ ना, ना मैं समझ रहा हूँ, बात मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कंप्लीट की बात, सुने तो सही ना तसल्ली से। ठीक है, we are not good conductor of electricity. Actually, our body contains water, and
that water contain minerals. ठीक है, so that's why current pass through those minerals and water solution. ठीक है, conduction through the salted solution. ठीक है, तो salt water is a good conductor of current. इस वजह से हमारे बॉडी से भी करंट पास होता है। लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर दूसरी चीजें हैं, ठीक है, most of the body after water that is made from the protein. Protein is not a good conductor. ठीक है, ओके, कुलकर्णी। यस सर। अच्छा, असलम। यस सर, अगर हम नॉन कंडक्टर जैसे कि वुड है और कंडक्टर जैसे कि सर वायर के जो अंदर होता है, इन दोनों के पार्टिकल मिलाए जाए, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? किस तरह मिलाएं हम? सर जैसे कि उनको उनके स्मॉल पार्टिकल जो हैं सर, उनको मिक्स किया जाए और फिर उसमें से वो जो वायर के अंदर जैसे होता है वैसा बनाया जाए। अच्छा देखिए बेटा, जब अगर उसके हम स्मॉल पार्टिकल्स क्रश करेंगे, दैट विल कन्वर्ट इनटू द पाउडर। ठीक है, अच्छा अब अगर उस पाउडर के अंदर मेटल के जितने भी पार्टिकल्स कनेक्टेड हैं, वो अगर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू आउट होल कंप्लीटली कनेक्टेड होंगे तो करंट पास होगा। अगर वहीं वो कहीं से भी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो उस वजह से करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा कि वो जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द गुड कंडक्टर दैट शुड बी कनेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, कहीं पे भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ गया तो फिर करंट पास नहीं होगा, अगर गैप नहीं है तो देन करंट विल पास। ठीक है, यस जवेरिया। सर हिन वीडियो में चयो वियो हुयो, मतलब इन ॾेखारियो त न हे न जेकी मेटल जी जेकी साइड आहे उहा मतलब गरम हूंदी आहे इलाही, जेकी प्लास्टिक हूंदी आहे उहा न हूंदी आहे। पर सर असांजे स्कूल में मतलब जेतिरो मूंखे ख़बर आहे त प्लास्टिक जी बि गरम थींदी आहे। गरम तो होंगी बेटा प्लास्टिक के मटेरियल, लेकिन जितने ज्यादा मेटल के मटेरियल गरम होंगे उतने ज्यादा प्लास्टिक गरम नहीं होगी। ठीक है, वो कम ऐं गरम। सर जेके वायर्स हूंदी आहिनि उहे ज्यादातर त सर रबर जी हूंदियूं आहिनि न, उनमें प्लास्टिक काथे हूंदी आहे? रबर या प्लास्टिक बेटा मिक्स्ड मटेरियल होता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो प्लास्टिक ही है। ठीक है, रबर को हम यूं कह सकते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक एज वेल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, तासीन। यस बेटा तासीन। सर मुझे ये पूछना था कि जो प्लास्टिक है वो सेमीकंडक्टर है ना? नहीं बेटा, सेमी नहीं है, दैट इज अ बैड कंडक्टर। ठीक है, बैड कंडक्टर है सर जी। प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होगा, अगर होता तो फिर ये तो वायर हम यूज ही नहीं कर पाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी फरमान, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर ये फरमान में तंग कर रहा है सर, आप जो समझा रहे हैं समझने नहीं दे रहा सर। सर बीच में मुझे सर वो लानत दे रहा है मुझे सर। अच्छा बेटा, अब मैं उसको क्या करूं यहाँ से? उसको खुद को शर्म आनी चाहिए। उसको सर नहीं करते, कुछ ना कुछ बोले सर उसको। क्यों तंग करे उसको? सॉरी सर। मोहम्मद सैफा। सर सर जो ग्लास होता है वो इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है? कौन सा ग्लास? सर हर ग्लास। सीमेंट का कह रहे हैं या कोई वुड का, यहाँ इस चीज का ब्लॉक? ब्लॉक तो जनरली लफ्ज है। सर जो मिरर होता है, मिरर जो होता है सर,
मिरर इज अ बेड कंडक्टर। गिलास कह रहे थे आप? अच्छा सर। सर जी सर क्लास एंड कब होगी? क्या कह रहे हो? सर क्लास एंड कब होगी? हाँ बस 3 मिनट है बेटा, ठीक है, परेशान ओके ना हो। सर। अच्छा बेटा, इसी तरह हमने अभी डिस्कस किया कि देयर आर सम लिक्विड्स व्हिच आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जिनमें से करंट इजीली पास हो सकता है। तो वीडियो मेरे पास है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम हम बचा है, 2.5 मिनट से बचे हैं। तो इसकी मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, या फिर हम कल ऐसे करेंगे कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम दैट वीडियो रिमेनिंग जो 2-3 बच्चे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछ लूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फरमान। यस यार क्या करूं? हेलो सर जी, सर व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज आर दी चार्जेस। अगर वो मूव करेगी दैट विल बिकम इलेक्ट्रिक करंट, और अगर एक जगह पे रुकी रहेगी दैट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्चुअली दीज आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है सर जी सर जी जी सर बेटा। प्लास्टिक के अलावा कोई बेड कंडक्टर है हीट का? हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। वुड हो गया, और इसी फॉर तरह एग्जांपल? वुड हाँ वुड। वुड है, ग्लास है, ठीक है। आयरन? आयरन इज अ गुड कंडक्टर बेटा। सर मिरर है, मिरर। मिरर इज अ बैड कंडक्टर, सही है। यस ओके सरवाण? बेटा, दैट इज वुड, मेड फ्रॉम द वुड, ठीक है। ओके अच्छा, एम डॉट, ये बेटा अपने नाम पूरे लिखा करें। ये एम डॉट क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर जो आपने अभी वीडियो दिखाई थी सर उसका लिंक दे देंगे? जी, वो तो मैं भेजूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा, ओके सर। अब लास्ट मिनट बचा है, तो मैं थोड़ा सा वाइंड अप करूं कि जो डेली लाइफ में हम बहुत सी चीजें हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल करंट भी कहते हैं हम। और इसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें से करंट पास हो सकता है, जिनको कहते हैं कंडक्टर, और कुछ ऐसी चीजें हैं विच आर बेड कंडक्टर।